Good morning, dear student. We have discussed about the chapter number 5, genetics, Mendel's inheritance. In case of that chapter, we have discussed about the basic concepts. All these basic concepts are related with particular terms. These terms are continuously used with Mendel's law. So first term that is related to the term number 1, that is the first factor, or another words we can say that is the gene. In previous condition or the old condition, the term is known as the factor. Mendel's is also just term that given, that is the factor, and nowadays that term is the gene. Gene is the structural and functional unit of the chromosome और द इनहेरिटेंस. जीन है वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इसको मॉडर्न सेंस में फैक्टर को ही जीन कहा गया है. एंड जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. वॉट एवर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर इज देयर, दैट बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स are inherited with the help of gene, but at the time of Mendelism that is also known as the factor. So gene or the factor in the modern sense an inherited characters or the factor that determine the biological character of an organism is called as the gene. यानी हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमारे अंदर पेरेंट्स हैं. These characters are inherited बाय द जीन. यानी हमको फादर और मदर से क्रोमोसोम मिले, उन क्रोमोसोम में कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है वो जीन करता है. एट द मेंडेलिज्म टाइम दैट इज सेम फैक्टर इज देयर. नेक्स्ट, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल. क्रोमोसोम है हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए है, उसकी एक यूनिट है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए इज आल्सो नोन एज द जीन. तो केमिकली जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए और इक्विवेलेंट टू द फैक्टर ऑफ द मेंडल्स के लिए इक्विवेलेंट फैक्टर्स को ही जीन कहा गया था. केमिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए है, हेरिडिटी की एक यूनिट, फंक्शनल यूनिट है, और बायोलॉजिकल कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करता है. नेक्स्ट नंबर 2, टर्म नंबर 2, दैट इज द एलिस और द एलिलोमॉर्फ. हियर इज द टर्म नंबर 2 इज गिवन टू यू, एलिस और द एलिलोमॉर्फ. Or in case of the particular part, there is the particular term is used, that is homozygous, heterozygous. These terms are there. First of all, what is the alleles? देखो हमारे पास में, for example, I have the one character. The character is the height of organism. हमारे पास में character है height of organisms. तो height एक character है. इस करेक्टर को इनहेरिटेंस करता है वो जीन है. वो क्या बोलो? जीन. अब ये कह रहा है कि जीन हैव द टू फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म. वन इज द डोमिनेंट फॉर्म एंड अनदर इज द रिसेसिव फॉर्म. देन व्हाट हैपन? हियर इज अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट इज देयर. हमारे पास में जीन में टू फॉर्म्स आएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म है, that may be dominant form or that may be recessive form. In case of these terms, the alternative forms of this gene is known as the allelomorph, as well as that is also known as the alleles. Alleles एक pair है, pair of gene है, that is always present in form of pair. They have the two forms, alternative forms. One is the dominant form, another is the recessive form. Just you have go through the one example also. For example, height of organism, that may be plant or that may be animals. Height of organism, the height is the character, biological character, and which can be inherited by the gene. उसको inherit करता है कौन? Gene. But they have the two forms. Gene is present in form of pair. For example, आपने बोला tall, capital T capital T. आपने बोला tall, capital T small t. आपने बोला dominant, recessive, small t small t. But they are present in form of pairs of gene. Pairs of gene is known as the alleles as well as allelomorph, and they have the two forms.
One is the dominant, another is the recessive form. So alleles, the particular term is there, allelomorph, meaning one form of the or the other forms. Indicate the alternative form of same gene. एक ही जीन के दो alternative form हो गए. मैंने कहा height, दो form हो गए, एक dominant और एक recessive. Second, if the factor of represent the extremely or the alternative of character, they are called as the alleles or the allelomorph pair. मैंने आपसे पहले बोला हर जीन एक पेयर के फॉर्म में रहेगा. जब गैमेट बनेगा तो पेयर ब्रेक हो जाएगा और वो सिंपल और आपके पास में अल्टरनेटिव फॉर्म में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल प्योर टॉल और द प्योर डॉर्फ. अपने एक एग्जांपल लिया, एक कैरेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट, या तो प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ. तो प्योर टॉल के लिए कैपिटल टी, और अगर आपके पास में डॉर्फ है तो उसके लिए स्मॉल टी, और अगर आपके पास में हेटेरोजाइगस फॉर्म है तो कैपिटल टी, स्मॉल टी. An organism having the two identical alleles is known as the homozygous. अगर सेम टाइप के जीन से कोई भी कैरेक्टर बना है, that is the homozygous. For example, capital T, that is the homozygous. Small t, that is the homozygous. And second case, if the identical alleles are consist with different forms, one is the dominant form, another is the recessive form. और homozygous में dominant और dominant होंगे या recessive और recessive होंगे. But in case of the heterozygous condition, one is the dominant and another is the recessive form. So there is again the first alleles or the allelomorph. Whatever type of gene is there, they have the alternative form and they have just present in the form of pairs. The pair of gene which is known as the alleles. For example, height of organism, there is the two forms, alternative form, dominant or recessive. Dominant means capital T or small t, and recessive means small t and small t. Their form or the pair is known as the alleles or the allelomorph. One term is the homozygous. If same type of gene is there, capital T or capital T, homozygous है. Small t or small t, homozygous है. Or heterozygous means if the particular trait or the gene pairs will consist with dominant and recessive. Heterozygous, capital T and small t. So these are the particular term which is related with alleles or the allelomorph, homozygous and heterozygous. Next, term number 3. In case of another part, that is the gene locus. Gene locus means what? The whatever type of gene is there, the gene can be fixed site is there. For example, that is the chromosome is there. In that chromosome, here is that particular form of chromosome. There is that is the site, particular site, and that is the site of or the locus of gene for the height. Maybe different form, other form character is there, other gene is there, next gene is there, next gene is there. Whatever type of gene is there, their region, their site is fixed. If the portion or region will be changed, it means the character will be changed. So it is the portion or the region of a chromosome representing a single gene. The alleles of a gene are present on the same gene locus on the homozygous chromosome. एक ही क्रोमोसोम पे है तो होमोजाइगस होगा. क्रोमोसोम खुद अगर सेम टाइप के जीन से होगा और डिफरेंट फॉर्म है डोमिनेंट और रिसेसिव तो हेटेरोजाइगस फॉर्म हो जाएगा. सो दैट इज द जीन लोकस. नेक्स्ट अनदर टर्म इज हियर. Next term, another term which is related with the homozygous. I have just already told to you. मैंने आपसे बोला है कि हमारे पास में अगर कोई भी कैरेक्टर सेम टाइप के जीन से बना है, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैरेक्टर बना है कैपिटल टी और कैपिटल टी से, इट मीन्स दैट इज द होमोजाइगस. दैट इज द होमोजाइगस, सेम टाइप ऑफ जीन है. फॉर एग्जाम्पल फादर से भी कैपिटल टी मिला, मदर से भी कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर के जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है, ऑफ स्प्रिंग में कौन सा आ रहा है, कैपिटल टी, दैट इज द होमोजाइगस. नेक्स्ट केस, फादर से स्मॉल टी, मदर से स्मॉल टी, और स्मॉल टी फ्यूज हो जाते हैं और स्मॉल टी आ जाती है, यानी प्रोजेनी है, ऑफ स्प्रिंग है, उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है वो स्मॉल टी आ रहा है. इट मीन्स व्हाट हैपन, कैपिटल टी और कैपिटल टी, दैट इज अगेन द homozygous. Small t or small t again the homozygous. If whatever type of character is there, that character can be consist with the same type of gene. Father and mother both having the same type of gene, then that is known as the homozygous.
होमोजाइगस में या तो डोमिनेट और डोमिनेट होगा या रिसेसिव और रिसेसिव होगा। जैसे आपने बोला एलिन्स हैव द टू फॉर्म, अल्टरनेटिव टू फॉर्म्स, वन इज द डोमिनेट एंड अदर इज द रिसेसिव। आपके पास में वैसे ही अगर डोमिनेट और डोमिनेट जीन से बना है तो वो होमोजाइगस है, रिसेसिव और रिसेसिव से बना है वो होमोजाइगस है, और एक डोमिनेट और एक रिसेसिव से बना है तो वो कौन होगा? हेटेरोजाइगस होगा। नेक्स्ट, another case is there, that particular term which is related with the heterozygous. Heterozygous means a offspring which is consist with two type of genes. One is the dominant gene, another is the recessive. Suppose the father is having to the gene is the capital or the dominant gene capital T, and mother is having to small t gene. Means the representation of character is again the height of plant or the dominant trait will be there, but the particular character will consist with two type of genes. One is the dominant, another is the recessive, and that form is known as the heterozygous. That form is known as the heterozygous. So same case is there. Oh, no necessary. You have to take one more example. For example, one is the seed are the rounded, that is the dominant trait, and another is the wrinkled, that is the small r. And when we have this cross between the two parts, rounded and wrinkled, it can be consist with capital R and small r, the offspring, that is the F1 generation, but that is the heterozygous character. Why? Because one part is the dominant and another is the recessive. Next is another term is there. After them we have the one more thing is there, that is the genotype, and another term is there, phenotype. So simply we have the one thing is there. Genotype means the organization of gene. Genotype, the particular term is there, genotype. Genotype means in the simple word genetical or gene level organization. What type of organization? Gene level organization. Whatever type of gene is there, that may be dominant gene or that may be recessive gene, or dominant or recessive, both conditions will be there. But on the basis of gene, when we have just go through the particular ratio, but which is based on the genetical organization, that is known as the genotype. I have one example. For example, in simple case, here is that one plant is there. That plant is tall, and second plant, that is the short or the dog, or capital T, small t, small. When we have this cross between that part, that is just consist with capital T, small t, and the appearing character is the tall, hybrid tall. It means what happened? Here is a simple case, that is the F1 generation. Again we have conduct the cross F1 with F1, and F2 generation, one is the pure tall, another is the hybrid tall, one more is the hybrid tall, and another is the short. Capital T, small t, small t, small, capital T, small t, or small t, small. Then what happens? Here is, that is the different character on the basis of genetical organization. जेनेटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जब भी हम बात करेंगे तो वो जीनोटाइप बोला जाएगा. आई वॉन्ट टू राइट द जीनोटाइप. यहाँ पर ये जनरेशन कौन सी बताओ? F2. अगर मैं जीनोटाइप लिखना चाहूँ कंडीशन नंबर 1 की, तो केवल आपके पास में कैपिटल टी, स्मॉल टी. कंडीशन नंबर 2 का मैं जीनोटाइप लिखना चाहूंगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. यू हैव राइट दैट पार्ट. टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज 4, और आउट ऑफ 4 1 is pure tall, 2 is hybrid tall, and 1 is the short or the dwarf. ये जो रेशियो आया है जीनोटाइप का, क्यों? जीन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने इसको लिखा है, जीन के टाइप के बेसिस पे हमने इसको लिखा है. दैट्स व्हाई दैट इज द जीनोटाइप. जीनोटाइप में आपको इतना ही रखना है, द पर्टिकुलर रेशियो विच इज द बेसिस ऑन जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन. जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जीन के लेवल के बेसिस पे जो भी रेशियो लिखा जाएगा उसको जीनोटाइप बोला जाएगा. कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. और सेम को वापस नहीं लिखना है. ओके. और नेक्स्ट आता है अपने पास में फिनोटाइप. अब फिनोटाइप में थोड़ा आपको चेंज होना है. कैसे? देखो, इन केस ऑफ फिनोटाइप एक ही वर्ड याद रखना, फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस. एक्सटर्नल अपीयरेंस. In case of external appearance means what happen? External appearance का मतलब क्या होगा? How to looking outer side. दिखने में कैसा? Phenotype मतलब दिखने में.
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया कि इन दैट क्लास टोटल नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर देयर, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स those students which have the height is more than 5 feet, those students which have the height is less than 5 feet, then what thing is there? That is the phenotype. Why that is the phenotype? Because that character is based on the external appearance, physical appearance, then that is known as the phenotype. But here is that part of in that cross, when we have just go through the phenotype, we have the simple thing, 4 generation is there. आउट ऑफ 4 जनरेशन, F2 जनरेशन में टोटल पार्ट ऑफ 4 ऑफ स्प्रिंग, आपको दिखने में टॉल कितनी, तो आपका आंसर रहेगा वर्ड्स बेसिस पे होता है, फिनोटाइप हमेशा वर्ड होता है, टॉल विथ डॉग, देन यर आंसर 3:1. सेम केस था, जीनोटाइप था 1:2:1, और जब फिनोटाइप पे बात आई तो 3:1. क्यों? क्योंकि ये तो था जीन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, और ये किसके बेसिस पे है? एक्सटर्नल और फिजिकल अपीयरेंस बेसिस पार्ट है. तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा वो आपके फिनोटाइप होगा 3:1 और जीनोटाइप होगा 1:2:1. सो दैट इज द फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप. नेक्स्ट, आफ्टर द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप वी हैव वन मोर थिंग इज देयर, that is again related with the particular part, that is the generations of homozygous, individual which produce the offspring of the, यानी अपने पास में एक कंडीशन है प्योर लाइन सिलेक्शन, या प्योर लाइन का मीनिंग क्या है? अगर कोई भी कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन जाता है, आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन देयर अपीयरेंस विल बी सिमिलर इन दैट फॉर्म. कोई भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अगर 2, 3, 4, 5 जनरेशन में कंटिन्यूसली सेम रिप्रेजेंटेशन ला रहा है, इट मींस दैट इज द होमोजाइगस. और प्योर लाइन में पहली शर्त है होमोजाइगस. कौन सी शर्त है? होमोजाइगस, यानी सिमिलर टाइप ऑफ जीन दैट मे बी डोमिनेट और दैट मे बी रिसेसिव और रिसेसिव, क्योंकि सेम कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन अपीयरेंस रहना चाहिए. कैपिटल टी प्योर लाइन है, स्मॉल टी प्योर लाइन है. जैसे ही आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते होते हो, दैट इज नॉट ए प्योर लाइन. 3 जनरेशन 4 जनरेशन सेम जीन कैन बी अपीयरेंस, दैट इज द प्योर लाइन. सो जनरेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल व्हिच प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ओनली वन टाइप, एक ही टाइप का जनरेशन टू जनरेशन आ रहा हो. ब्रीडिंग का 2 प्रोसेस है फॉर देयर फिनोटाइप और द जीनोटाइप. जीनोटाइप भी उसका वही रहेगा और फिनोटाइप भी वही रहेगा. किसमें है? प्योर लाइन में, क्योंकि जेनेटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी वही रहेगा और फिजिकल अपीयरेंस है वो भी जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेगा. सो वी हैव द बेस्ट टर्म, ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ सिलेक्शन दैट हैव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन सिमिलर पार्ट, सेम टाइप का जीनोटाइप और फिनोटाइप रहता है. इट मींस दैट इज द प्योर लाइन. In case of only the tall plant generation after the generation on the being of self-pollinator or the cross-pollinator among themselves, these forms of pure line of tall pea plants for 3 to 4 generation. Pure line के लिए पहली शर्त है कम से कम 3 to 4 generation में similar condition आ रही हो, it means that is the pure line. After one generation character will be changed, it means that is not a pure line selection. So pure line means homozygous. Generation to generation, genotype and phenotype, its appearance are again similar. That is the pure line selection. Next is another term is here. There is a monohybrid cross, dihybrid cross. So first of all, monohybrid cross means what? Here is the first thing. If we have conduct the cross between the one pair of traits, if we have conduct the cross between the one pair of traits, हम कोई भी कैरेक्टर यानी क्रॉस कंडक्ट करवाते हैं एक पेयर ऑफ ट्रेट के बीच में. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट. हाइट ऑफ प्लांट में 2 फॉर्म्स हो सकते हैं. एक आपके पास में डोमिनेट फॉर्म है और एक आपके पास में रिसेसिव फॉर्म. Then what happened? Dominant and recessive form. Height dominate में कैपिटल टी, रिसेसिव में स्मॉल टी.
हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। यहाँ गैमेटोजेनेसिस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फ्यूज हुए कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन बनी? F1 जनरेशन। अब जो आपके पास में F1 जनरेशन बनी है, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगेन हम भले कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ करवा रहे, बट दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है वन। व्हेन वी हैव कंडक्ट द क्रॉस बिटवीन द वन पेयर ऑफ ट्रेट, एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म अल्टरनेटिव होते हैं, डोमिनेट और रिसेसिव। आप रिसेसिव और रिसेसिव का क्रॉस करा सकते हो, डोमिनेट और डोमिनेट का क्रॉस करा सकते हो, डोमिनेट और रिसेसिव का क्रॉस करा सकते हो, बट हमारे पास में ट्रेट कितना है? वन। ऑल टाइप ऑफ ट्रेट्स एंड जीन्स आर परचेंज इन द फॉर्म ऑफ पेयर। सो व्हेन वी हैव कंडक्ट द क्रॉस बिटवीन द वन पेयर ऑफ ट्रेट, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हमारे पास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो F2 जनरेशन का जीनोटाइप आया था 1:2:1 और फिनोटाइप आया था 3:1। मोनो मीन्स वन पेयर ऑफ ट्रेट्स। साहब लिखा ओनली वन एलिस पेयर इज कंसीडर्ड इन द क्रॉस और द ब्रीडिंग फॉर्म। नेक्स्ट डाइहाइब्रिड। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था हाइट ऑफ प्लांट का, डोमिनेट और रिसेसिव दो फॉर्म है। डोमिनेट के लिए कैपिटल टी, रिसेसिव के लिए स्मॉल टी लिया और इनमें गैमेटोजेनेसिस हुआ, F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन का वापस क्रॉस कराओगे तो हमारे पास में F2 जनरेशन बनेगी और देयर इज द कैपिटल टी स्मॉल टी। सो व्हाट हैपेंड हियर इज दैट इज द F2 जनरेशन और देयर इज द जीनोटाइप इज द 1:2:1 और phenotype is the 3:1. So monohybrid cross means when we have conduct the cross between the one pair of traits. Second is the dihybrid cross. Dihybrid means when we have take the two pair of traits. For example, आपने दो ट्रेट ले ली, एक तो ले लिया सपोज करो हाइट ऑफ प्लांट और एक आपने ले लिया कलर ऑफ फ्लावर। How much traits are there? Two. When we have conduct the cross between the two pair of traits, for example, capital T, capital R, cross with small t, small r. So what happened? Here is a simple aspect. One is the dominant form capital T. Color of flower, that is the capital R. So two traits are there, height of plant and color of flower. और the color of seed ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आपका डोमिनेट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। बट हाउ मच ट्रेट्स आर देयर? टू ट्रेट्स आर देयर। व्हेन वी हैव कंडक्ट द क्रॉस बिटवीन द टू ट्रेट्स और टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, दैट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम मोर देन टू ले लेते हैं, थ्री ले लेते हैं, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। मोर देन थ्री, देन दैट इज द पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। सो व्हेन वी हैव कंडक्ट बिटवीन द वन पेयर ऑफ ट्रेट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, F2 generation, the genotype or phenotype, the phenotype ratio is 9:3:3:1 and genotype is the 1:2:4 1:2:1 means, which is again we have just go through the cross section, after then that part will be there. So simple aspect, monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross or the polyhybrid cross. Monohybrid means one pair of traits. For example, height of plant. Dihybrid cross means two pair of traits. One is the height of plant, another is the color of flower or the color of fruit or the seed, कोई भी है। और trihybrid, three characters. Polyhybrid, more than three characters. Next, after then we have a cross will be there, that is the reciprocal cross. Reciprocal cross means what? We have changed the genetical organization between the parent, but their phenotype and genotype did not change in offspring. आप समझ लीजिए, पहले दो कंडीशन डाल रहा हूं मैं। कंडीशन नंबर एक, वन इज द मेल, अनदर इज द फीमेल। मेल है कैपिटल टी, फीमेल है स्मॉल टी। गैमेटोजेनेसिस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को फ्यूज करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब मैं क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल क्रॉस कंडक्ट कर रहा हूं। केस नंबर 2 पे आओ, मेल एंड फीमेल। पैरेंटल में फीमेल, मेल इज रिसेसिव स्मॉल टी, पहले था डोमिनेट, अब क्या हो गया रिसेसिव। फीमेल रिसेसिव थी, अब डोमिनेट कर रहा। ओके, गैमेटोजेनेसिस कीजिए, स्मॉल टी कैपिटल टी। गैमेट्स को फ्यूज करवा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन हुई, F1। चेक करें, यहां पर भी F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। I think there is phenotype and genotype is not changed. Only we have changed the parental genotype and phenotype. पहले जो डोमिनेट था वो रिसेसिव हो गया, जो रिसेसिव था वो डोमिनेट हो गया, बट ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर पे, फिनोटाइप और जीनोटाइप पे कोई चेंज नहीं आएगा। That type of cross is known as the reciprocal cross. The reciprocal crosses involve the two crosses connecting at the same characteristics. मैंने कहा ना 2 पार्ट लेना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो डोमिनेट है पहला, मेल डोमिनेट है, फीमेल रिसेसिव है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। इधर आ जाइए वापस, सेकेंड केस पे आ जाइए, जो डोमिनेट था उसको रिसेसिव कर दिया, जो रिसेसिव था उसको डोमिनेट कर दिया। दैट कंडीशन विल बी appeared. Next, after the reciprocal cross, genome, very unique word is there. Whatever type of organism is there, in case of that organism, we have the one thing, if the two forms of DNA, one is the haploid, another is the diploid, if the total number of chromosomes in haploid chromosome, then that is the genome. Just we have go through the one example, human being का example ले लीजिए, 2n diploid is equal to 46 और n is equal to 23। ये haploid है फॉर्म है और ये हमारे पास में डिप्लॉयड फॉर्म है। अब चेक करें, डिप्लॉयड में 2n इक्वल टू 46 और हैप्लॉयड n इक्वल टू 23। नाउ दिस टाइम द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ जीन इन हैप्लॉयड क्रोमोसोम में टोटल नंबर ऑफ जीन होंगे या टोटल जो डीएनए होगा, दैट इज द जीनोम। द सेट ऑफ जीन इन हैप्लॉयड क्रोमोसोम और द डीएनए। अब फिर चेक करें, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लीजिए, 2n इक्वल टू 46, n इक्वल टू 23। नाउ हियर द 23 इज द हैप्लॉयड क्रोमोसोम। 23 में जो डीएनए सेट है, दैट इज द जीनोम। सो द टोटल सेट ऑफ जीन्स, डीएनए स्ट्रक्चर इन द हैप्लॉयड does to the chromosome and the inheritance is unit from the parental offspring is called as the genome. Whatever type of organism is there, in case of that organism, here is a simple aspect will be there. In that aspect means what happen, simple part, there is the condition number 1, आपको इतना ही याद रखना है, haploid total set of gene is known as the genome. एग्जाम्पल ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग में 2n इक्वल टू 46 है, n इक्वल टू 23 है, तो 23 क्रोमोसोम का जो सेट है डीएनए का, वो अपने पास में क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा जीनोम। नेक्स्ट आता है जीन पूल। द टर्म इज देयर जीन पूल। इन केस ऑफ जीन पूल we have the simple aspect will be there. What thing? All the genotype of all organism in a population. जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग के जितने भी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जो जीन है या टोटल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप्स है, these genotypes of all organisms in a population, that is known as the gene pool. ह्यूमन पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप है, that is known as the gene pool. Next, we have the another term is here. That part, first test cross. In case of that part, a simple case, what is the test cross? इस पे आपका क्वेश्चन भी आ चुका है. Test cross means when we have conduct a cross between the F1 generation and the recessive parent.
व्हाट टाइप ऑफ पेरेंट? रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट। मैं एक एग्जांपल पेरेंटल ट्रेट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, चेक करें, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी F1 जनरेशन क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट। हमने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल अपने पास में सिंपल केस है, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। देन व्हाट हैपन? There is a simple thing is there. At that simple thing, height of plant two forms. One is the dominant form, another is the recessive form. Dominant में capital T, recessive में small t, small t. जीन ऑर्गेनाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस हुआ, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t. फ्यूज हुए कैपिटल T, स्मॉल t, और ये बन गया कैपिटल T, स्मॉल t. कौन सी जनरेशन बनी? F1. नाउ दिस टाइम F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट के साथ करवाना। रिसेसिव कौन है? स्मॉल t, स्मॉल t. तो F1 विथ रिसेसिव. सो अगेन कैपिटल T, स्मॉल t क्रॉस विथ स्मॉल t, स्मॉल t. चेकर बोर्ड बनाओ, पुनेट ने दिया था, पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं इसको. यहाँ पर आप गैमेटोजेनेसिस का लीजिए, ये लाइन मेल की है और ये इधर लाइन फीमेल की है. इसके गैमेट्स बनेंगे, पहला कैपिटल T और इसका दूसरा इसका बन जाएगा स्मॉल t. इसके गैमेट्स बना स्मॉल t, स्मॉल t, सेम बनेंगे. इसको इसके साथ ऐड करो, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t. इसको इसके साथ जोड़ा, कैपिटल T, स्मॉल t, इसको इसके साथ जोड़ो, स्मॉल t, स्मॉल t. दिखने में टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, डॉर्फ है, हाइब्रिड टॉल है, और ये आपके पास में डॉर्फ है. सो नाउ दिस टाइम दैट इज द F2 जनरेशन. बट टेस्ट क्रॉस, अब आप एक काम करेंगे, इस टेस्ट क्रॉस में एक तो इसका लिखेंगे आप जीनोटाइप और एक इसका लिखेंगे आप लोग फिनोटाइप. चेक करें वापस, वन इज द जीनोटाइप, अनदर इज द फिनोटाइप. जीनोटाइप में आप क्या लिखोगे? देखो चेक करो. जीनोटाइप में आपके पास में सिंपल सा है, कैपिटल T, स्मॉल t, 1:1. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप 1:1 होगा, और फिनोटाइप में आप लिखोगे टॉल एंड डॉर्फ, तो आपके पास में आ जाएगा 1:1. आई मीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ आर द सिमिलर in test cross, and the probability of the dominant and recessive trait, that is the 50-50%. 50% traits are the dominant and 50% traits are the recessive. In what case? That is the test cross. But sometimes the question will be changed. What happen when we have conduct the cross of heterozygous and homozygous traits? When we have obtained the progeny, there is a 50% progeny is the dominant traits and 50% are the recessive. Identify that problem and just go through the checkerboard also. तब उस कंडीशन में आपको आंसर लिखना है, the problem is the test cross and 50% का बोलना है वापस, और वो भी आपके पास में डोमिनेट और रिसेसिव को लेकर के आपको क्रॉस कंडक्ट करवाना है. फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:1 आएगा. अगर यही डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो 4 टाइम्स 1:1 लिखा जाता. 1:1. Okay, next, so there is the test cross. टेस्ट क्रॉस पे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रहता है, F1 जनरेशन क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट. पहले पेरेंटल ट्रेट ले लो, एक डोमिनेट और एक रिसेसिव, हाइब्रिड कंडीशन बनेगी, उसको F1 जनरेशन बोलेंगे. F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट के साथ करवाए, चेकर बोर्ड बना लो. जीनोटाइप 1:1 रहेगा, फिनोटाइप होगा, मोनोहाइब्रिड के लिए 1:1 होगा, और डाई हाइब्रिड है तो 4 टाइम्स 1:1 हो जाएगा. ओके, थैंक्स, वी विल मीट ऑन टुमारो.